तो अगर तुम कॉलेज के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर में हो एंड Amazon जैसी कंपनी में काम करना चाहते हो, देन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम इज फॉर यू। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम है Amazon वाओ एंड ये हर साल कंडक्ट किया जाता है एंड इसका पैटर्न हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे एंटायरली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, इसकी वेबसाइट वॉक थ्रू, कैसे तुम्हें रजिस्टर करना है। सेकेंडली विल बी टॉकिंग अबाउट अगर तुम इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, तुम्हें इंटरव्यू इनवाइट आता है तो वो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, ऑनलाइन टेस्ट कैसा होता है, क्या कुछ आता है, क्या कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है उसमें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं जो तुम्हें शायद नहीं पता होंगी। एंड अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, फीमेल पास आउट हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। So as you can see on the screen, this is the website for Amazon Wow this year, and you need to click on the register button. But let's understand what they want. If you are a women student who is currently pursuing your bachelor's or master's, then you are eligible for the same. इस वीडियो में हम completely discuss कर रहे होंगे एंटायर प्रोसेस, मतलब इसमें रजिस्टर करने के बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना उसके लिए। एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। If you're a women student pursuing a 4 years BTech, BE or 2 years MCA, MTech program are eligible for the same. बेसिकली अमेजोन का ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू दे हैव कंसिडर्ड कि यार जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरेस्टेड हो, शोज इंटरेस्ट, तो उनको डायरेक्टली रिक्रूटर रीच आउट करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। करंटली बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं। 6 मई को एक सेशन है दैट इज इन बिल्डिंग करियर्स इन साइंस। 23 मई को एक सेशन है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एडवांस पे। जून 2024 में एसडी ऑनलाइन प्रेप है। फिर रिज्यूमे बिल्डिंग पे एक सेशन है। इंटरव्यू टिप्स पे एक सेशन है। अनकन्वेंशनल टेक कैंपेन। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो Amazon करंटली कंडक्ट कर रहा है। पुरानी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी इनके पास पड़ी हैं इफ यू वांट टू गो थ्रू। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, साइंस, लीडरशिप प्रिंसिपल्स, मीट द लीडर सीरीज, मल्टीपल चीजें हैं, राइट। एंड पिछले साल के कुछ लुमिनाइज की फोटो इन्होंने दे रखी है यहाँ पे जो लास्ट ईयर सिलेक्टेड थे एंड कौन कौन से रोल्स के लिए हायर करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। वन इज SDE, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, इसमें इंटर्नशिप भी आती है, फुल टाइम रोल भी आता है। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, SDET, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट, प्रोग्रामर एनालिस्ट, सिस्टम डेवलपमेंट इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर, डेटा इंजीनियर। तो ये कुछ रोल्स हैं जिनके लिए हायर करती है Amazon वाओ के थ्रू भी हायर करती है एंड इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम दोनों के लिए हायर करती है। तो यू जस्ट नीड टू बी एक्टिव, यू जस्ट नीड टू पार्टिसिपेट इन ऑल देयर वेबिनार्स एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द सेम। FAQs में भी तुम पढ़ सकते हो इसका मेजर रोल क्या है, व्हाट इज Amazon वाओ एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पोर्टल। सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्मेशन पता चलेगी Amazon में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, दे विल ईमेल यू डायरेक्टली। तो दिस कैन बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तुम्हें जाके अप्लाई करना है, अटेंड करना है इनके सेशंस, राइट। अब रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यू विल सी यू नीड टू फिल आउट योर नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, कॉलेज का नाम, डिग्री, एंड कोई भी डिग्री हो सकती है, मतलब नो ब्रांच रिस्ट्रिक्शन इन दिस, राइट। इसके अलावा 24, 25, 26 कौन से बैच से हो, अगर 26 से भी नहीं हो, 27 से भी हो तो कर सकते हो। लिंक्डइन प्रोफाइल दे देना यहाँ पे एंड यू आर डन, राइट। इसके बाद देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में और क्या कुछ है। लेट्स गो एंड सी। ऑल्सो Amazon के प्रोसेस में कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो 2024 के लिए, तो एक स्पेशल ऑफर इज रनिंग। तुम्हें 7 डेज के लिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा होगा गेट कैटेगरी का, जिसमें यू कैन एक्सेस ऑल द लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्लस तुम डिजिटल नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो, सारे टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस कंप्लीटली फॉर फ्री। इसमें एनरोल करने की लास्ट डेट 8 मई है, जाके अभी चेकआउट कर सकते हो। सारी चीजें तुम्हें फ्री में मिलने वाली है फॉर नेक्स्ट 7 डेज। दिस कैन बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जाके तुम 1-2 सब्जेक्ट्स पूरे भी कंप्लीट कर सकते हो इफ यू वांट टू चेक आउट। तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अभी चेकआउट करो, रजिस्टर करो फॉर दिस 7 डे फ्री ट्रायल। सो एज यू कैन सी द एलिजिबिलिटी फॉर दिस इज 2024, 2025, 2026 female pass outs also. The roles that they're looking out for currently is full-time software engineer as well as SD intern, 2 months and 6 months. These are the roles that they hired through Amazon Wow. What is the CTC of full-time roles? CTC that Amazon is currently offering is close to 44 lakhs per annum, which includes 26 base. I'm not saying 26 base. It's instead of base, it's a cash component that you'll be getting in the first year. So this is the cash component that you get in the first year, plus you'll get stocks plus joining bonus. Stipend that they offer is close to 1 lakh per month, plus you'll be getting a relocation bonus if you need that. So this is basically about Amazon Wow, what all things are necessary and how can you participate in it. How this process is going to be and how it is going to be aligned. Firstly, you'll be having sessions. I've shown you which all sessions you will be having. So multiple different sessions based upon leadership principles, based upon resume building, careers, women in leadership. So multiple different sessions will be there. Also, there'll be some sessions on data structural algorithms, programming and stuff like that. After these sessions, you will be invited for online assessment at Amazon. Once you clear that online assessment, there will be 2 tech interviews and 1 hiring manager round. We'll discuss in detail about what is going to be there in the online assessment and what are going to be the interviews based upon.
right? So if you're someone who is watching this for the very first time, make sure you do hit that like button and subscribe to this channel. Let's keep the like target of this video as 1500 likes so that more and more people can know about such opportunities and we can help everyone. So this online assessment for internship, let's say if you're a second year student and you're looking out for an SD internship at Amazon, the online test will be having 4 different parts. So the first part is going to be an debugging section. There'll be 7 questions based upon debugging. You will have questions in which you need to find out the error in a code snippet and you need to tell. So it can be an error also, it can be some mistake of syntax also. So you need to identify and you need to tell. So it's a very simple round. If you have like practiced very basic coding, you know basic fundamentals of coding, you will be able to ace this round. After this, there's a round known as aptitude round for interns, in which you'll be getting around 24 to 25 questions. And it's also a very easy round if somebody is good at maths, so you can solve it very, very quickly. Next round is you don't need to specifically prepare for first and second round. Third round is basically a coding round in which you'll be getting 2 questions, and these will be statement questions. Like you'll be given some scenario. Let's say Amazon is doing this and this. Amazon Fresh is delivering orders, and there's a statement that is framed. So you'll need to find out which data structure to use, how to solve that problem. So the level of questions is, I would say, medium level lead code questions, not very tough, not very easy. So it's a medium level lead code questions. You need to spend some time to understand and think, but overall, I would say the level of the test is easy to medium, not very tough. After that, there's a leadership principles round that in which you'll be asked some MCQs, around 50 MCQs based upon your general thinking, whether you like to wear a watch or not, whether you like to wake up early or not. So this is basically to test your personality. So this is going to be the online assessment. Once you clear this, you will be invited for interviews. For full-time roles, in some cases, you will see that they don't take this 4 parts of a test. You will have only data structural algorithms test that is mandatory. After this, there are interviews for internship. Like if they are going through Amazon Wow, you might have either a single round of interviews or at max 2 rounds of interviews. Single round of interviews, it will be a coding round in which you'll be asked 2 data structural problems to be solved in 45 minutes, and that's it. Once you clear this round, you get a chance to do an internship at Amazon. Else, there can be second round, hiring manager round. It will be a generalized round in which you might be asked about data structural algorithms, might be asked about your resume, might be asked about your project. So might be asked about leadership principles. So what are leadership principles? There are 16 leadership principles of Amazon. I'll give the link to these leadership principles in the description. You can go through these and you need to align your answers based upon these leadership principles, how you will be depicting these leadership principles in the type of work that you will do at Amazon. This is something that should be there in your answers, right? So this is very, very important. After that, for full-time role, there are 2 technical interviews, 1 hiring manager round, 2 technical interviews, again in the same format, 45 minutes, 2 questions, 2 data structural algorithm questions in most cases. Some of the interviews might ask you questions related to computer science fundamentals as well, but major focus is on DSA. After this, there's 1 hiring manager round. It's also a generalized round. It can be based upon anything, any topic, but more of you should prepare for leadership principles in the final or the third round. What are the resources that you should prepare? There are a lot of resources. Like major focus, if I talk about in Amazon interviews, is data structural algorithm. If you're good at DSA, you're good to go with the entire process, starting from the online assessment to the final interviews. Second, thorough with the leadership principles. For some rounds, you should know what all these leadership principles mean and how can you frame up answers. Pick some things that you have done in your college life, done in your projects, done in some hackathons, and how you can relate those things to the answers that you're giving. So this is something that you should priorly work upon before moving to the interviews. Next is time management. Time management is also very necessary because if you'll spend a lot of time in one single question in the interview, right, then in 45 minutes only a single question will be done. So that's a negative point. You need to solve 2 questions in 45 minutes. That's the minimum necessity for getting into the next round. So make sure you manage your time well. Don't give too much time to one single question. If you know the question, take some time to explain the approach and understand what the interviewer is asking, then only like give it the approach, then move to the next question. Don't waste a lot of time on one single question, right? So this is a must apply opportunity for all female candidates who will be graduating in 2025 or 2024 and they're looking out for roles in Amazon. Make sure you do attend these webinars. You get to know about Amazon. You'll have more interest in becoming a software engineer. So that was it for this particular video. अगर तुम वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो लिख के जाना कमेंट सेक्शन में कि कहाँ से देख रहे हो, कौन से कॉलेज से देख रहे हो. This gives me more motivation to make videos for you. Thank you so much. Wishing you all the best and see you in some other video. Till then, good luck. Bye.